This screen is visible to everyone? Yes, sir. Screen is Yes, visible to everyone now. Okay, fine. So now just look at it that what we're going to do is our experiment number one, and that is the interfacing of LCD with 8051. Okay. So can anyone tell me what do you mean by an LCD, first of all? What is an LCD? What is an LCD, first of all? display. It's an LCD. What is an LCD? LCD is basically your display. Liquid Okay. crystal display. Pardon? Liquid crystal display, sir. Liquid crystal display. So that's an alternative of basically LEDs, 7 segment LEDs. Okay. So now these are not going to be used basically. Okay. So we have in the syllabus LED is also there. So with that we will look at it separately. So if you see LED, like 7 segment LED, there were some like you can say some limitations that here you can't display all the characters. Okay. There was a limitation with the characters, numbers that you can display with that. Okay, and then you can say uh, here initially the LCD was extremely costly, so this was very rarely used. But now the decline prices are there. Decline price of LCD, and the most important one is its ability to show the all the characters, everything with very ease, and ease of programming as well. That's programming is actually okay, is also responsible for the popularity of LCD. Okay, so let's start our discussion with, so for to understand that, okay, you'll have to understand first of all that why we what are the what is sorry what is the uh, structure of LCD first of all. So first, you already know this, okay? Because when I start the practical, you know that the basics are even not covered. So that's why I've taken the slides. We have just seen this, okay? So that's a basic blood diagram. CPU, your ROM, okay, RAM, timer circuit, serial ports, IO ports, bus control, interrupt control, oscillators. I hope you remember this figure, right? And that's a basic block diagram. Okay. Why I have taken this figure? Because I want to tell you that you have 4 ports over here. From here we will take the data. Okay. So how we are going to connect that? For that I have taken this figure. Okay. The next thing is your various versions of ROM. Okay, where you can see that, as I told you, that 8031 is not having any ROM available with it. Okay, but if you see this 8051, this you already know that ROM is there, 4K kilobytes of ROM. Okay, RAM 128 bytes, 2 timer, 32 IO pins, 1 serial port, interrupt sources 6. Okay, so these are all the possible combinations. Now you have to see the LCD, how it is, how it actually looks. Okay, what are the pins which are available over here, and how we can mark them. Okay, so if you see basic LCD, okay, then I'll make that figure for you. Okay, I'll make that figure for you. If you see a basic LCD, it is having these many chips. Insert a right. Then I'll come to that part because that's the interfacing that you can't understand directly. Okay, first you will have to understand this, that what is the basic LCD. So for that I will make an LCD for you. Okay, so here you have you can say that there are 16 pins, okay, in this LCD. So I'll make this 16 pins. When you see this LCD, it looks like this. Okay, it looks like this. Okay, and there are various pins which are there. Okay, so I'll mark those pins from here. Okay, so I have to mark that. I'm writing as one, two, three,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, and what these pins are basically doing, okay, what they do basically. So pin number 1 is VSS. Okay, this pin number 2 is VCC. Then you have VEE. Okay, then fourth one is RS. Okay, then you have read or write. Okay, then you have enable. Then you have DB0 up to DB7, DB0, DB1, DB2, DB3, 4, 5, 6, and 7. So these are all the data pins. Okay, these are all for controlling purpose. Okay, control pins, and these are all the supply pins, supply and contrast control. Okay, supply and contrast control. That I can show you from here also. Just look at it. I can take it from here, and I can show you from here also. From the Proteus also I can show you. Okay, just look at it. I have kept it like this. You can see this. This is pin diagram of your LCD. Can you see these pins? Okay, is it visible for you? Is Yes, it visible sir. to everyone? Yes, sir. Fine. So this is your LCD. Okay, I'll do one thing. Take this figure from here. I will put it in this slide. Okay. This is a better way. Okay, so now just look at it. You have to understand the pins over here. Okay, I hope this is quite good now. Okay, where is my pen? Okay, so when you see this LCD, you have certain pins. So first you'll have to understand that what do they actually, what they are doing over here. So these are basically the supply pins. As I told you right now, I made this figure for you. So these are the data pins. Okay, so 0 to 7, so 8 bits data, you can see 8 bit. Okay, these are the two control pins, and these are the two supply and contrast control. Okay, supply and contrast control. So you can see that how you have to understand that what these pins are basically doing. So I'll tell you one by one. Okay, so basically if you take this VSS that is connected to the ground, and VCC is there for power supply. So this is connected to ground, and this VCC is basically for the, this is connected to ground, this is for the power supply, and then you have the VEE. Okay, and this VEE is actually for the contrast control. So if you see this VEE for the contrast control, that you have the LCD, and behind that some LEDs are actually incorporated. So when you take this VEE, okay, and via what we do, this is your VCC pin. Okay, this is your VEE pin. So what we do, this is uh, connected to sub 5-volt supply. So what we do, we are going to take a potentiometer like this. Okay, and then we are going to connect this pin via this potentiometer to this one. So what we'll do, when you vary this potentiometer, the voltage across VE is actually varying. Okay,
and that is going, this is through which you can you can control the contrast of the screen. Okay, so this is for the contrast control. Now this RS is for you can say that's called as the register select. Okay, register select pin. Okay, then you have the read and write pin and enable pin. Okay, so that I will discuss in detail, just have a 2 minute. Okay, then rest of the pins all are 8-bit pins. Okay, or you can say you can connect the 8-bit data over there. Okay, so just like that, what you have connected is, see, these are the data pins right from D0 to D7, and I have connected it to port 1. Okay, as I told you that most of the time you'll use port 1 as your IO pins, okay, for the interfacing with other devices. So I have connected it like this. Now VCC, VE and VSS, you see, as I told you, VCC connected to plus 5 volt, VSS connected to ground, and VEE you can have a 10K pot, or you can say with the help of a rheostat, you can vary the voltage across this to for a proper contrast control. I hope this So point what is does clear to contrast everyone. control mean? Like if you see like behind the LCD screen, okay, there are some LEDs actually. So when you actually vary the voltage across them, those LED will be growing like with a bright, it will become brighter or less brighter, you can say. So like you can see that when you are going to change the contrast, these are the characters which are there, which are going to be on the LCD like that. Suppose these are the characters, so they will be visible, more visible or less visible. So if you have the contrast, like if in the same way, like you haven't operated anything with the contrast, like your TV or your some any of the device where you can vary the contrast. So you just do one thing, you vary the contrast on your in your TV, and then you see what happens. Okay, so that's for something clarity of the picture, you can say. Okay, Yes, sir. fine. So same purpose, anywhere the contrast is being used. Okay, and this VSS is actually grounded, and these are connected to the ports. Now these are the 3 control pins, you can connect it anywhere. Here in my case I have connected it to these 3 ports, but you are able to, you are free to connect it to any of the port. But remember, when you are doing this port connection, accordingly you have to write it in the program, right? Because I have used this as 3.0, 3.1, 3.2. So that's why in the program itself I will be using these things. If you take any other port, you can leaving this port 1, then you'll in the program itself you'll have to make the change. So for this point of time you don't make any change, you just leave it like this. But yes, you can connect it to any port. So this is called as the interfacing diagram or circuit. So whenever you are asked in the exam that you write the interfacing program of 8051 with LCD, the first thing that you have to make is to make this figure. Okay, otherwise you will at least 50% marks for the program will be cut. Why? Because the program is written on the basis of this. I'm not going to check that whether you have taken the program and then I'll try to map with this figure. I won't do that, nobody does. So first you'll have to make the interfacing diagram compulsorily, and then you have to write your program. Please mark this point, this is very, very important. Without interfacing diagram, if you are going to write the program, that will reduce your marks by half. Okay, got this point? So first the interfacing diagram. So let me tell you one more time thing. Okay, so this is the interfacing diagram where I have taken this the data pins of the LCD are connected to port 1. Then the supply pins, obviously these are connected, and the control pins I have connected for my program to 3.0, 3.1 and 3.2, and this is the interfacing diagram. Okay, any doubts till this point? Then I'll explain the
what are these pins, RS pins, what are these सर एक pins, बार these आ five रहे, pins. हाँ यही वापस एक बार एक्सप्लेन हाँ, ये करना। मैं वो अभी एक्सप्लेन किया नहीं है बेटा, अभी मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन उसको, ठीक है। फाइन, सो इंटरफेसिंग डायग्राम इज क्लियर, ओके। Yes, sir. Just see that what these RS pins will be doing, right? So these control pins are important, okay. So first I'm going to explain you this RS pins, which is called as register select pin, okay. So there can be two values when RS is equal to 0 and when RS is equal to 1, okay. Now see, when you are going to select, there are two scenarios first of all, okay. Now whenever you are going to give the command to the uh, LCD, first you have to do the setting that controller will be doing, or via program you will be telling the LCD that what you need to do, like you blink the LED first, okay, you start the cursor at this position, okay, you have to go from left to right, okay, you will use the first, because in this LCD it is what we are going to use is divided into two parts basically. So the screen will have two lines, you can write it over here and over here as well, right? So it will be divided into two parts, so you can write 16 into 2, okay, 16 characters here and 16 characters over here, okay, 16 characters over here and 16 characters on the second line as well. So this is the LCD that we have taken. So you can give the command key that you want to write it on the first line or you want to write on the second line, okay. You have to start blinking the cursor, you want to go from left to right or right to left. So such kind of instructions the controller would like to give it to the LCD. Are you getting this point? So these are called as commands. Okay, when you are giving the commands to the LCD, point number one. And when you have done, when you are done with all the settings, then you will be only giving the data कि भाई ये लो display करो. You display A, display B, display C, like that. Are you getting this point? So there are two scenarios when you are giving it the commands to the LCD, okay, then you have to place, when you are addressing to the command register, okay, where you will be giving the commands, okay, to the LCD, then you have to put RS value is equal to 0. But when you are going to address the data register, okay, whether you are going to read it or write, whatever you do, okay, so there are two registers, one is command register, second one is data register. Command register, when it is accessed, when you are giving the command to the LCD, okay, that you do this thing, we will write on the second line to start from left to right or right to left. There are so many instructions that I'll let you know in some time. So this is the register selector pin. The value will be based on the thing that whether you are going to give the command to the LCD or you are giving the data. So you want to access the command register or data register. Based on that, the value will be taken as RS equal to 0 or RS equal to 1. Got it? Next is your read and write. Okay, this one, read or write. So either there are two options. You will be writing on the LCD or you can also read from the LCD. So basically here we will be writing onto the LCD. Okay. So if you want to write on the LCD, you will have to press it 0 for write. And if you want to read from the LCD, you will have to give 1 to this pin, read write. Got this point? This is very simple. Okay. Whether you want to read from the LCD or write from the LCD, you can appropriately set this read or write. The next one is your enable. This is called as enable. Okay. Now what does this enable pin is doing actually? That suppose you have given the command or you have given the data, okay, any of the operation, it will be only executed when you give a pulse at this enable pin. Okay.
Which pulse? A high to low pulse. Like suppose we have given an instruction to LCD. So that instruction or you have given the data to LCD, that will not be executed unless you give a high to low pulse, at enable pin. So after giving every command and every data, you have to give this pulse from high to low. I hope this I'm making this point, and I will show you in the program that it will be more clear. So you'll have to put a high to low pulse at the enable pin, and that has to be at least 450 nanoseconds wide minimum. Okay, minimum 450 nanosecond wide का आपको pulse देना पड़ेगा high to low. Clear with these things? These are the supply, ground, contrast control. These are the data pins, and this is register select. So which register you want to select, or you can say in layman language that whether you are giving the command to the LCD or you are giving the data to the LCD to display. So based on that RS value we will select. So we will be giving the command as well and the data as well. Appropriately we will set this one. Similarly, you want to read on the LCD or write on the LCD, read from the LCD or write from the LCD. For that RW pin you will appropriately give the command. And whenever you are giving the command, whether to read or write or do the command or give the data, you'll have to always put enable pin high to low pulse. Only then you will be able to execute the instruction or the command. Any questions till this point? Any questions till this point? No, sir. Okay, fine. Now just look at it. What we do. So this interfacing diagram you have to keep in your mind that we have connected the data pins to port number 1, RS, RW, E2 3.0, 3.1 and 3.2 respectively. Now this is what I explained you. Now what are those commands? I'm talking about the command. Okay, but what are the commands which are given to the LCD? Just look at it. This is what I have told you, that either you will be giving the command to the LCD or you will be giving the data. So command you will give in the form of hex number. Okay, so where you have given the command, okay, where you have when you are moving this hex number, okay, so there are various hex numbers which are there working as a command. Like suppose if you provide 1, it will clear the display screen. Okay, it will clear the display screen. How we are going to give that, I'll explain it via the program, not here. Similarly, there are some instructions particularly I would like to mention that we are going to use it that there in the Word file. So let me show it to you. So look at these commands. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So just look at it. So these are the commands that we have already used in our program. Like when you put the hex number over here, it will clear the display screen, right? When you will put hex number 6, then it will increment the cursor, where shift the cursor to right. Okay, when you want to go from left to right or right to left, this kind of things. Okay, then we have used this E, display on cursor blinking. So what happens when you take the LCD like this? What will happen? This LCD will be, what it will be doing, it will start and the cursor will be blinking at this position. So for that you have some commands. Then you have the shift cursor position to the left with 10. Then we have 80, that is force cursor to the beginning of first line. We are going to use the first line. By default it is taken. If you want to use the first line or second line. If you want to use the first line, no need to give the instruction, or if you want to give, you can give 80. Okay. Second, if you want to force the cursor to beginning of the second line, then you have to put C0 or 80. Where to give, I am coming to that point. And we have used this also 2 lines and 5 into 7 matrix 38. So these are the hex commands which are given to the LCD to adjust it. Okay, to do certain things. These are not for displaying the data.
This is for the initial setting of the things. Okay, I hope I'm making my point. So please mention that we are using this clear display screen, increment cursor, display on, cursor blinking, shift cursor to left, and force the cursor to beginning of first line, and we'll be selecting this. So when you will see that I have used 1, 6, E, 10, 80, etc. in my program. Fine. Okay. So now you can see the program. Okay, you understood the concept, how we can do that. Now let's look at the program. Okay, so as I will simply share this file right now with you, because there are some instructions are yet to be left, but we can't wait for them. That always happens when you are teaching the program for 8051. You have to start with the program. Okay. So let me discuss. I hope this is clear to you. I'll send this file to you so that you can directly, you don't need to write it right now. Okay, you understand, later on you can do the practice and write the things. So whenever you are writing the program, okay, you will start from here. Okay, okay, that this line always you have to write. Why? Because this is your ROM. Okay. Starting address. Yeah, this is the starting address of the ROM, 0000H. So whenever you actually reset the 8051 microcontroller, the first instruction that it is going to take after that will be from this memory location. This will be the memory location from where it will start taking the instruction. So first we will write this line, then you have the main program. Okay, where what I'm going to do, look at it. There will be different subsections of it. The first one is main. So what I'm going to do is, because now we will repeat this line so many times. Why? See, I have connected move P1 hash 38H. So what will happen? 38H will be moving to port 1. Okay. And what is there at port 1? You have connected at port 1 the data lines. Okay. Have you connected the data lines to port 1? If you remember the diagram. Yes, sir. Yes, Okay, sir. just look at it. Please keep this in mind. At port 1, you have connected the data lines. So whenever you are writing that move 38H to port 1, so this port 1 will be adjusted with 38H. Okay, and that will be given to 8051. Now it is not understanding whether you are going to give it a command or for the data register which this 8051 wants to address to this 8051. It has to provide some additional information. Okay, so for that what we have is, you will write in the second line. Please understand this program carefully, and if you don't understand, please let me know. I will again make you clear. Look at it. Move P1 38H. So what will happen? This is your 8051, and this is your LCD, and you have connected port 1 over here, and what you are sending? Hash 38H. So what is this data? In this way you can send the data directly to P1. So I will tell you why this we have written like this, and all sort of things we will discuss. Okay. So hash 38H, if you are giving, now you know that this is a command that you are giving. Hash 38H is doing something. Okay, and what it does, you are going to select 2 lines and 5 into 7 matrix. Okay, so this is the first command that we are using. But when you send this 38H to LCD, how will it come to know that whether any command is coming or data is coming? Because that can be a data as well. So for that, we are writing another, we are calling one more instruction or one more part of the program where we are calling it as a call command. Okay, so I hope that now programming is clear to you. You can write main program and then you can write the sub programs into it. So whenever you are calling it, there are 2 types of call, a call and L call. Okay, absolute call and long call. Okay, so that I will let you know when I'll take the call instruction, and that we are going to cover in huge detail. Don't worry about it. Okay, so here we are going to take the a call. Right now you little bit memorize, otherwise we will not be able to complete the lab.
So here we will take a call simply. So we are calling this command section of the program which we have written. Okay, so let's go to that program what we have written in the a call command. So command we have defined. What is that command is? Look at it. This is the command which is defined over here. Fine. So whenever it is writing a call command, okay, it will, the execution of the program will immediately come to this point. I hope I am making my point. Fine. Are you getting this point? Yes, sir. Right. Now, when you execute the program, then what it is, you are sending the clear to port 3.0. Okay. And again, come to that point. Okay. How you have connected your things. So if you see how you had connected, just let me show you over here. Okay. How you have connected port 3.0 पे बेटा आपने क्या connect किया? RS. पोर्ट 3.1 पे RW और पोर्ट 3.2 पे enable. ठीक है? So let me write it over here. 3.0 पे RS, 3.1 पे RW and then enable. So when you see this, see पोर्ट 3.0 पे आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है? ये इसका RS पिन है और ये आपका 3.0 है यहाँ से. ठीक है, ये आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है. फिर आपने 3.1 पे क्या किया हुआ है? RW. ओके, रीड और राइट. फिर आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है? 3.2 पे क्या कनेक्ट किया हुआ है? इनेबल पिन. ये आपका LCD का पार्ट है और ये आपका कौन सा पार्ट है? 8051 का पार्ट है. Now what you are going to do, whenever you clear that, you have two commands. One is set and second one is clear. When you clear that particular port, it means what? यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. And when you set a particular port, वहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. तो you are writing clear port 3.0. मतलब यहाँ की वैल्यू क्या हो गई बेटा? यहाँ की वैल्यू क्या हो गई? 0. And this 0 you are giving to RS. Okay. Are you getting this point? When you are giving clear port 3.0, what does it mean? You are giving RS pin the value 0. And you know that you have two options. When RS is equal to 0, you want to access the command register. When RS value is 1, you want to access the data register, or in a layman language, you are giving the command to the LCD, and when RS is equal to 1, you are giving the data to the LCD. I hope I am making my point, this point clear. You understood why clear 3.0 is doing? It clears RS. That means what? It is telling that I want to use the command register, or you can say that I am giving you the command. 8051 is telling 8051 is telling the LCD that I am giving you the command. Got it? Got it? Please respond. Or any doubts if you have? No, sir. Okay, fine. Now the ये तो हो गया, आपने डेटा दे दिया. Now what you are doing? Tell me. You want to write. You are actually writing the command over there. Okay, you have to store the command. Okay, तो उसके लिए आपने अभी देखा कि अगर आप रीड और राइट आपके पास बटन है, ठीक है. रीड राइट को अगर आप 0 कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? राइट कर रहे हो. और अगर 1 कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो. तो अभी आप रीड तो करोगे नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू रीड, वी आर ओनली गोइंग टू राइट. तो सिंपली आपको रीड राइट को क्या करना है? 0. तो अब बताइए, रीड राइट आपका जो पिन है वो किससे कनेक्टेड है? 3.1. तो अगर आप 3.1 को क्लियर करोगे तो RW पिन को 0 चला जाएगा. So this is why we have written clear pin 3.1. That is a clear read write, that is port 3 and pin 11. This is pin 11, this is pin number 10 and this is pin number 12. समझ में आया हमने क्यों clear port 3.1? क्योंकि we are going to write that command on the LCD. We are not going to read it. Now what is the next thing? I told you that you will have to give a enable, okay, high to low pulse, okay, high to low pulse, and then only whatever you have done over here will be applied. Okay, so high to low pulse आपने इसको कहाँ पे कनेक्ट किया बेटा? 3.2 पे. तो हम क्या करेंगे? पहले सेट कर देंगे, सेट बीट 3.2,
और आफ्टर सम टाइम वी विल डू द क्लियर 3.2। तो जब सेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी, क्लियर करेंगे तो इसकी वैल्यू लो हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये पल्स जो है बेटा वो अपने को देना पड़ेगा किस पे, इनेबल पिन पे, तब जाके ये जो आपने ये जो दो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना वो एग्जीक्यूट होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So what we have done, we have set this pin 3.2 and then we have cleared this pin 3.2, and obviously you'll have to call some delay. So it has to be high for some time and low for some time. For that we have written a program delay that I'll tell you separately. Okay, that we'll call delay. It will simply, suppose we have written it for a 2 millisecond delay. So for 2 millisecond it will be high and then it will be low. That's it. And then it will return. Return means what? After it will be returning to the main program from where it was called. I hope this point is clear to everyone. Please have a look at it and then tell me, because this frequently gets repeated. So when do you do these three things, your hash, what we were intended to put is 38, hash 38h is actually applied to the LCD circuit. Clear? Any doubts till this point? Any doubts you have? सर हमको डिले फिर 450 मिलीसेकंड्स का देना पड़ेगा ना? हाँ, हम लोग ऐसा डिले का ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, हाँ वो भी देख ही लो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा डिले का प्रोग्राम लिखा है that a call delay it will be there. So we have written in such a way that it will be look at this. This delay will be generating the time delay which is definitely greater than 450 nanosecond. That I will tell you separately. Right now I can't explain this one, that how this is generating the delay. Okay, this you can also do by using the timer register also. There are so many ways to do that, so that I will discuss separately. So when you write these lines, okay, this will generate a delay which is definitely greater than 450 nanoseconds. Okay, and why it is required? Because you have to put at the enable pin a high and a low pulse. Okay, and that has to be minimum with 450 nanoseconds. तो उसके लिए अपने को डिले लगेगा, so that थोड़े टाइम तक वो हाई रहे और फिर लो हो जाए, that's it. And that we are going to apply at the enable pin. I hope you are getting my point. Is it okay? Yes Any sir. more questions? So what does set B Fine. mean? Set bit means जैसे set Okay, B, okay. it's a command. That bit. Okay, it will make that particular port 1. जैसे like suppose करो मैं लिखता हूँ set bit port 1.0. So what it will do? पोर्ट 1.0 पे आपका जो पोर्ट 1.0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जिससे भी कनेक्टेड है वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसी का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हमने क्या किया था, सेट पिट लिया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो करेक्ट। ओके, so what we have done is we need to give the enable pin high, and this enable pin of LCD is connected to 3.2. ठीक है, तो 3.2 पे अपने को, इस enable pin पे अपने को अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करवाने हैं तो हाई टू लो पल्स देना पड़ेगा, राइट, इट इज रिक्वायरमेंट। तो कैसे हाई करेंगे इसको, यहाँ पे 1 कैसे देंगे, हम लोग 3.2 को पहले सेट कर देंगे और फिर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सेट करने के लिए, मतलब ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट बिट 3.2, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, हाई पल्स अप्लाई हो जाएगा, एंड देन वी विल कॉल डिले, तो वो जितने भी टाइम के लिए ये डिले प्रोग्राम आपने लिखा है उतने देर के लिए हाई होगा, एंड देन व्हाट वी विल कॉल, देन वी विल कॉल द क्लियर पोर्ट 3.2, सॉरी यहाँ पे पोर्ट होगा पोर्ट 3.2। ओके, अंडरस्टूड? सो दैट विल प्रोवाइड 1 और 0 अकॉर्डिंगली। Yes, sir. क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो इन द सेम वे वी नीड टू डू सो मेनी सेटिंग्स फॉर, फर्स्ट यू कैन से फॉर प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एलसीडी। तो सबसे पहले हमने क्या दिया था, आप देखिए बार बार ये चीजें, ये कमांड और कॉल मैं यूज करूंगा, तो ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो एवरी टाइम वेन एवर यू आर गिविंग अ कमांड टू द एलसीडी, यू हैव टू कॉल दिस कमांड। ओके,
So now come to the upper side. Now look at this. Now similarly, I want to give some other instructions as well. Okay, and what are those instructions? Those instructions are like this. That you look at it. I am going to give the instruction as 0EH. And look at this. This is hex number. Okay, equivalent binary or equivalent signal will be applied to the bits of port 1. Okay, so I am giving it port hash 0EH. So what it does, when you apply 0EH, it makes the LCD on and cursor starts to blink. That you can see from the table, that when you are going to give the command as 0E, what it does. I'm just writing it from here. Look at it. See, when you give the command 0E, what it does, it moves the it does the display on and the cursor starts blinking. Okay, so this is what the second thing we have done. And in the same way, we will call, this is just the copy paste of the program with some other commands that you are going. First we have given 38H. इसने क्या किया, 2 लाइन्स और 5x7 मैट्रिक्स सेलेक्ट किया. फिर हम क्या दे रहे हैं इसको, 0EH दे रहे हैं. उससे क्या हो जाएगा, LCD ऑन हो जाएगा, कर्सर ब्लिंकिंग हो जाएगा. ओके, एंड वी विल कॉल द कमांड एंड डिले बोथ. ओके, कमांड में भी डिले कॉल होता है, तो थोड़ा थोड़ा डिले करके आएगा, तो लिटिल बिट ऑफ सेपरेशन काइंड ऑफ थिंग. 0E दिया हमने, तो क्या होगा, LCD ऑन एंड कर्सर ब्लिंकिंग होगा. फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम दे रहे हैं 01H. इन द सेम वे what we are going to do, hash 01H. so ये क्या करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन को क्लियर कर देगा. मतलब अगर पहले से कुछ भी होगा तो डिस्प्ले स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा. then again we will call the command and the delay. What is the next thing that we are going to do, we are going to give hash 10H. so what it will do, it will shift the cursor position to the left. ये आपका LCD है, तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा. I hope you are getting my point, everyone. Okay. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, we are going to give hash 06H. so what it will do, it will increment cursor, shift cursor to the right. मतलब ये यहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ से आप ऐसे ऐसे लिखना चालू करेंगे, इधर से इधर के लिए. Fine. Then as I told you that we have, फिर हम लोग क्या दे रहे हैं, 80H दे रहे हैं. What it will do, you have 2 lines. so it will be telling that you are selecting line number 1. line number 1 के पहले पोजीशन पे कर्सर आ जाएगा. ठीक है. so these many commands that you have to give to the LCD. okay, and every time we'll call the command and the delay. are you getting this point? This point is clear to everyone? Is it okay? Is it okay? सर ये इंक्रीमेंट वाला एक बार वापस बता दो ना. ये वाला इंक्रीमेंट कर्सर, सी देखिए यहाँ पे क्या करना है. ये देखो हमारा, हमने क्या क्या दिया. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले तो 5x7 का मैट्रिक्स और 2 लाइन का ये सिलेक्ट किया. कि हम पहले क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको कि 2 लाइन्स और 5x7 का मैट्रिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं. फिर हमने LCD को ऑन कर लिया और कर्सर ब्लिंक होने लगा. फिर हमने क्या किया, क्लियर किया डिस्प्ले स्क्रीन को कि भाई डिस्प्ले पे अगर कुछ था तो चला जाए. फिर हमने लेफ्ट में ले लिया कर्सर को. हमने कहाँ पे ले लिया, लेफ्ट में ले लिया कर्सर, यहाँ पे आ गया कर्सर. ठीक है, ये हमने लेफ्ट में कर्सर को ले लिया, यहाँ पे आ गया. उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट कमांड था आपको याद रखना है कि उसका हेक्स कमांड क्या है. फिर हमने क्या किया कि भाई इंक्रीमेंट कर्सर कैसे होगा, ये लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट हमने सेलेक्ट किया. फिर हमने क्या किया कि भाई इंक्रीमेंट कर्सर मतलब पहले यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, ऐसे इन दिस वे. इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट टू राइट. जैसे मान लो मुझे NMIMS डिस्प्ले करना है, तो पहले कर्सर यहाँ पे होगा, नेक्स्ट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा. Is it okay? We are going from left to right. Yes sir. Right. Then finally what we did one more setting is required कि भाई हमारे पास 2 लाइन, उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो. तो हमने दिया 80H अगर हमने दिया तो we are at line 1 and we are at position number 1, extremely at the left. So these many commands are required for the LCD to work. So these are all commands that you have given. I hope it is clear to everyone. Okay, commands are done. Yes, sir. Yes.
Now we are going to put the data. तो डेटा कैसे देंगे? डेटा विल गिव इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे मान लीजिए कि माय नेम इज देयर दीपक. ओके, so DEEPAK. So first I will give D, then I'll give E, then I'll give E, then I'll give P, then A, then K. So similarly here I have written that's what like NMIMS. Okay, or any other thing you want to write. आपको अपना नाम लिखना है basically. So यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर डालेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा सिंपली. ओके, यहाँ पे मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें आपका डिस्प्ले होता है NMIMS. ओके, आपको अगर स्पेस चाहिए तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट हियर देखिए यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे दिया है NMIMS. सो फर्स्ट यू हैव टू गिव दिस डेटा. n आपको डिस्प्ले करना है, राइट? सो n को आप कहाँ पे मूव करेंगे? कहाँ पे मूव करेंगे? पोर्ट 1 पे. ठीक है, क्योंकि पोर्ट 1 पे आपका डेटा कनेक्टेड है किसका? LCD का. लेकिन इस बार जब ये n पहुंचेगा, ऑब्वियसली ये हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ n जाता है वहां पे, नो डाउट. ठीक है, तो हेक्स आपको नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली करके देगा. हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ n विल बी गोइंग टू द LCD at the data lines of LCD. I hope this point is clear to everyone. But this time you are not giving the command. तो LCD को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कमांड आ रहा है कि डेटा आ रहा है? तो उसके लिए फिर से हमने एक और सेक्शन प्रोग्राम का लिखा, उसका नाम दिया DATAL. कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस रिजर्व वर्ड आप मत दीजिएगा. चाहिए तो डेटा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सो DATAL वी आर गिविंग. ओके, सो दिस DATAL वी हैव डिफाइंड इट ओवर हियर. तो रिमेंबर हमने इसके पहले क्या दिया था? ए कॉल कमांड, कमांड करके कुछ लाइन स्पेसिफाई किए थे. ठीक है, तो कमांड में हमने ये सब चीजें लिखी थी. लेकिन अब ये कमांड तो नहीं है, अब तो ये डेटा है. तो इसके लिए वापस से आपको एक सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने कॉल किया है. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कॉल किया? हमने कॉल किया DATAL. तो अब देख लीजिए फटाफट से इसका मतलब क्या है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. So this DATL, whenever it is being called, the program execution will come over here. So now what you have to do, ये आपका है ये आपका है RS, ये आपका है RW, और ये आपका है इनेबल, एंड ये आपका है पिन 3.0. सॉरी उल्टा बना दिया मैंने. So here you have your LCD and here you have your, what is that called as, 8051. ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे हो गया. ठीक है, so what ये 3.0, 3.1 and 3.2 पोर्ट नंबर, एंड यहाँ पे क्या है आपका RS, RW and enable. Fine, so these are connected like this. Okay, so what is the program that you are going to write for this? Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है? 3.0 को 1 करना है. याद करिए. तो 3.0 RS की वैल्यू, if RS is equal to 0 that means you are giving the command. If RS is equal to 1 that means what you are giving the data. तो अब आप बताइए कि डेटा दे रहे हो आप, कमांड दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप बताइए फटाफट से. This time you are giving the data. Right, so for that the value of RS has to be equal to 1. तो अगर आपको RS की वैल्यू 1 करनी है तो आपको ये पोर्ट को सेट करना पड़ेगा, पोर्ट 3.0 को सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है? सेट बिट. तो वी आर राइटिंग सेट बिट 3.0. व्हाट इट विल डू? इट विल सेट RS एंड इट विल बी नाउ knowing that no, this is a data, this is not a command that has come. Clear? Any doubts? No, sir. Right. Next is the read or write. Obviously, we are again writing the data. We will never read from here. So this has to be done to 0. So 0 करने के लिए अपने को 3.1 को clear करना पड़ेगा. This is same. Okay, exactly same that what it was at the previous one. And then we'll have to again put the enable. So high to low देना पड़ेगा. तो पहले इसको set करेंगे, फिर उसको clear करेंगे with some delay. So look at this, the same line that I have written. Set bit 3.2, then call delay and then clear it. And then you return it. RAT will return it back to the main program. इसमें अगर किसी को तकलीफ है तो आप बताइए. ये क्लियर है? Yes sir, clear. Right. So if it is clear, then you can see that
whatever the characters you need to put, like जैसे मुझे अब देखिए यहाँ पे मुझे NMIMS पुट करना था, तो पहले मैंने n के लिए 3 लाइन लिखा, फिर यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे और जो भी कैरेक्टर डालेंगे वो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले होता चलेगा. पहले n, फिर देखिए मैंने रिपीट किया है, n के बाद m है, ठीक है, n के बाद m है, देखिए सेम लाइन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फिर i लिखा है, फिर m लिखा है, फिर s लिखा है. सिमिलरली अगर आपको अपना नाम वहां पे लिखना पड़ेगा तो आप, मैं क्या करूंगा, ये वाला यहां से हटाऊंगा और इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, d, इसके जगह पे लिख दूंगा e, फिर लिखूंगा e. सिमिलरली तो क्या डिस्प्ले होगा, दीपक डिस्प्ले होगा. आई होप यू, आई एम मेकिंग सेंस, आई एम मेकिंग माय पॉइंट. Okay, so this is the code for the display. Okay, and then we write then we are writing here s jump here. What it does, you want your name to be displayed, Deepak or NMS, whatever is there, it has to be continuously flashing on the screen. So here and s jump here, what it will make, it will be executing the same program again and again and again. Okay, fine, display again and again. And with program point of view, I'll discuss it later on, right? Because right now it's not that much complex. I'm telling you how the things are happening. Okay, is it clear to everyone? The program is clear. So we have written the main program, okay, and we have written the 3 sub programs or inside that. Okay, so one is your command, okay, one is your DATAL, and one is for delay. Fine. Any questions till this point? कुछ तकलीफ है किसी को? No, sir. Okay, fine. So now what I'm going to do is we will now do the coding. Okay, so this is the code and how you have to do. Let me tell you. So please open your microcontroller. I'm telling. Open your Keel software. Okay. Please open your Keel software. Then I'm going to give you this file, okay, through which you can simply sort the data and you can put it over there. So how to do that, let me show you. I'll tell you step by step, but before that let me give you the file, because when you write the program it will take a lot of time, but you have to practice definitely. Don't feel like that कि सर ने शेयर कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है वेलकम टू NMIMS. ओके, ये जो प्रोग्राम है सेम प्रोग्राम है, ऑन द सेम बेसिस we have written, and I have written it for welcome to NMIMS. Okay, and when I take it in the Proteus, it was displaying like this. Just look at it. What is the Proteus form? Okay, I think so. Just look at it. Whenever I execute this program, okay, it is being displayed over here. Oh, sorry, I think I removed those connections, so let me, I have removed those connections, let me close it. Okay, so whenever I'll use it, it will be showing me. Okay, anyways, fine. So this is the program that you have to write over there, and how you have to write I'll tell you, but let me share this code with you first of all. But remember, you have to practice this code. Okay, अगर आप लैब में होते तो मैं आपको डेफिनेटली लिखने के लिए बोलता, but here you can practice it later on also, so that we can save a little bit of time. But when you find any difficulty, we can discuss it at any point of time, not an issue. So let me write it on a notepad and I'll share it with you. This is the code for this. The code is clear to everyone. Any doubts if you have? No, sir. Okay.
So what I will do, I will simply send you this file. Please download it so that we will save some time. At least you won't waste your time in writing the program. But yes, you have to practice it without looking at. When I'm explaining that big, that seems to be extremely easy. Okay, but it's not that much easy. When you will do it, you will definitely have some difficulty associated. So that you can practice by looking at the video again, and then you can, then only you can do the things in a proficient way. So let me share that thing with you. Voice is not- Okay, so please download it, and then you open your Keel software. Okay. And then what we have to do is, okay, so after downloading it, please open your Keel software. Okay, and there, how to do that? If you, how many of you actually remember that? How to do the program in this? Everyone, or you forgot how to do that? So we weren't taught on this software before. Then which platform you had used? We are using Keel in the college always. Have you done this interfacing programming, and you have learned that 8051, and have you तो seen the किसी में भी output नहीं on that सिखाया. kit? अरे ये आपके सिलेबस में था, क्या बात कर रहे हो? सर लॉकडाउन सर लग गया था ना डी पिछले मैंने टाइम. टाजम पे किया था। अच्छा, ये पिछले टैजम पे आपने माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम किया होगा बेटा. हाँ सर ये पिछले What सेमेस्टर में about, था और तब लॉकडाउन लग गया तो नहीं हुआ. बट लेक्चर तो आपके हुए थे ना. मैं भी तो आपको अभी लॉकडाउन में ही सिखा रहा हूँ. फिर तो आपने प्रैक्टिकल नहीं किया था बेसिकली. No, सर प्रैक्टिकल नहीं किया. ओके, ठीक है, चलिए करिए. ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया, आपने डाउनलोड कर लिया. तो वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है. हाँ, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, अभी वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है ऑब्वियसली. ओके, सो हाउ टू डू दैट? यू ओपन द कील सॉफ्टवेयर. एवरीवन फटाफट से ओपन करिए. ओपन योर Done, कील sir. सॉफ्टवेयर, देन गो टू प्रोजेक्ट and new microvision project. You select it. Go to project and new microvision project. Here you will get it, project and new microvision project. Okay, when you do this project, okay, first of all I would request you to please make a separate folder for each and every practical. Okay, separate folder, because there will be so many files which will be generated over here. Okay, and that will make like फिर सब आपका mix up हो सकता है, वो problem हो जाएगा. So what you do, you make a folder over here just like this. Like I suppose I'm making a folder over here on my desktop, or anywhere you can make, but make a separate folder. So like I'm writing that MCES lab 1 folder I made, and this folder I will select, and I will this the practical name like LCD practical. It's the LCD practical, or I'll say LCD try. You write down experiment number 1 like that, LCD, or you write LCD, not a problem. Okay, so what you have to do, you have to select a particular, make a folder, and then you give it the file name, and then you save it. Okay, when you save it, you will get the window option like this. Yes, sir. Okay, everyone is getting. People who are not getting, please interrupt me.
only then I can understand. I will wait for you, not a problem. So here you can see that you have so many, chips available, right? So here you have to select your particular chip. Okay. So for that, what you are selecting is you select whatever we are using in the lab. Actually, the same thing I'll use over here also. So the Atmel company, go to Atmel, okay, and go to 89C51, 8089C51. See, so over there you click and the description will be available. We are going to use it 89C51, 8089C51. This is available when you take Atmel. Okay, Atmel को आप expand करिए, and here you select your appropriate 8051 controller, 89C51. Atmel में जाके expand करेंगे Atmel को, and then we'll select 89C51. हो गया, और फिर क्लिक करेंगे ओके, बिकॉज जो आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, ओके, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, एंड वो आपका फिक्स होना चाहिए. अदरवाइज जब आप ये जो प्रोग्राम अपना कंट्रोलर में बर्न करोगे, सो दैट विल नॉट वर्क. सो पर्टिकुलर कौन सा मॉडल आप सिलेक्ट करो, कौन से मॉडल में आप बर्न करने वाले हो ये प्रोग्राम को, that model you have to select in the starting itself. I hope I am making my point. So whenever you have selected 89C51, make sure that you please make sure कि आपने 89C51 select किया है. अगर आप कोई भी अदर select करोगे ना, तो आगे चल के प्रोटियस में आपका आउटपुट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कंट्रोलर अलग हो जाएगा. Okay, and when you have selected that, then you will get this message, say yes. So whenever you do that, you get a interface like this. You expand it, यहां तक आपका आना चाहिए. सर एक बार प्रोजेक्ट में जाके क्या करना है, एक बार प्लीज बता दो. ये देखो प्रोजेक्ट में गए, ओके, प्रोजेक्ट में गए, न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट में गए, ठीक है. यहाँ पे आप कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक नाम दे दो, ठीक है. फिर से बताऊं? ओके, ठीक है, चलो फिर से बताते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू फोल्डर, लाइक सपोज NCS lab 1. यहाँ पे मैं जाके सपोज LCD ही बनाया, यहाँ पे कोई नाम दे दो LCD एंड सेव इट. हाँ, यस, ओके, हम आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने वही सेम रखा. तो जैसे ही आप ये करेंगे, फिर आपको आएगा कि आप सिलेक्ट करिए डिवाइस फॉर द टारगेट, कौन सा डिवाइस. तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जाके Atmel सिलेक्ट करना है, और Atmel में जाके 89C51 सिलेक्ट करना है. देखिए ये वाला 8089C51, ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है. यस सर. जब ये सिलेक्ट करेंगे और करेंगे क्लिक ओके, तो ये पूछेगा कि भाई ऐड करना है क्या फाइल आपके प्रोजेक्ट में, से यस, ठीक है. तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका इंटरफेस आता है, ये टारगेट फाइल आपका बन गया, और वो टारगेट फाइल में ये स्टार्टअप का फाइल क्रिएट होता है. देखिए यहाँ पे इस तरीके से, व्हेन यू डबल क्लिक इट, इट विल बी ओपनिंग लाइक दिस. क्लियर? यस सर. Okay, now you can write your फाइल, जो भी आपको मैंने फाइल दिया, आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख सकते हो और उसको .asm फाइल से सेव करना होता है, ठीक है. तो वो कैसे करेंगे, या तो आप एक नया फाइल ले लीजिए, फाइल ओपन, यहाँ से आप फाइल में जाके न्यू जाके आप नया फाइल ले लीजिए, ठीक है. और क्या करना है फिर आपको, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल ले लीजिए, इसमें ही रहेगा, डोंट गो आउट ऑफ द टारगेट. एंड देन व्हाट यू डू, यू टेक द LCD प्रोग्राम फ्रॉम देयर, जो अभी आपको मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है. ये पूरा कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लीजिए. एक्चुअली ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखना होता है, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो, और वहां से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करिए. ओके, यस सर. ठीक है, पेस्ट किया. फिर आपको इसको डॉट, बिकॉज आपने ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है. हाँ सर, वो टेक्स्ट वन आपने कैसे बनाया सर? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको. यहाँ पे फाइल में जाना है,
न्यू करना है, न्यू जाके आप न्यू फाइल सेलेक्ट करिए तो ऑटोमेटिक अभी हम इसको रीनेम भी करने वाले हैं, डोंट वरी। ये टेक्स्ट वन और एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ओके, टेक्स्ट वन आ गया। और यहाँ पे टेक्स्ट वन में जाके ये जो भी आपने यहाँ पे आपको मैंने अभी फाइल जो दिया है उसको ओपन करिए और सारा कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, यू आर नॉट सेव्ड इट। ओके, सो हो गया, सबने पेस्ट कर दिया एवरीवन, ये पूरा कोड आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यस सर। Right, now you click on save, then when you click on save, one window will open and it will be asking कि भाई कौन से नाम से सेव करना है। So here you have to save it as an assembly file because you have written in the assembly language, so here you have to save it in the assembly file. So I'll write like the same, like lcd dot, यहाँ पे आपको extension देना है dot asm, याद रखिएगा। Here you have to write any name you can take, but the extension has to be lcd dot asm, सेम ही नाम दीजिए lcd.asm और इसको सेव करिए। सो जैसे ही आप इसको .asm फाइल में सेव करेंगे आप देखेंगे इसका पूरा कलर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया, कलर चेंज हो रहा है, सबका कलर चेंज होना चाहिए। कलर चेंज हो रहा है सबका। यस सर। .asm फाइल आपने किया, आपका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया, लेकिन ये जो आपका बेटा फाइल है जो आपने .asm फाइल बनाया ये इसमें ऐड नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसको इसमें पहले ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल डू, राइट क्लिक एंड ऑप्शन फॉर ग्रुप सोर्स वन, यहाँ पे जाएंगे, या फिर ये सॉरी ये वाला ऐड कीजिए, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप। यहाँ पे देखिए, ये सिलेक्ट करिए, यहाँ पे एज इट इज को छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट करिए यहाँ पे सोर्स ग्रुप वन एंड देन राइट क्लिक एंड देन ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप। फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फाइल, तो यहाँ पे पहले आप कर दीजिए ऑल फाइल्स, तो आपको ये दिखेगा lcd.asm दिखेगा, ये देख रहा है lcd.asm जो आपने अभी भी सेव किया है, और इसको जाके ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे जाके यू डू ऑन ऑल फाइल्स एंड देन यू सिलेक्ट .asm फाइल, ओके, एंड देन यू ऐड इट, क्लिक ऑन ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको यहाँ पे देखिए वो फाइल दिखने लगेगा lcd.asm फाइल। दिख रहा है सबको? यस सर। आपके प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए, यहाँ पे lcd.asm दिखना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड कर दिया। नाउ वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट द we have to like Sir, I yes, shut it by mistake. How do I open it back? this if you have saved it you can open it, the same thing will open, not an issue. Entire microvision you or entire this Heal software you just closed it or what? Surrender. I think What it did you- wasn't responding. No, so what, which software? पूरा आपने ये कील बंद कर दिया, क्या किया? ये एक So फाइल बंद basically, किया। I was just adding to an existing file, and then it was No, responding not and an it issue. shut Do it one. completely. It is not coming over here as an added one. If it is not coming, you can do one more thing. Again, you can add. Go to add, make all files, and then you select it. All that is required, it Okay, should okay. come over here. Okay. आ गया सबका यहाँ तक? हाँ सर। Okay, fine. Now what you have to do, you have to add it like to, you can say your you have to add it basically to means you have to generate the hex file out of it.
right? So how to generate that hex file out of it? So that you have to understand. So you are done with this point, and now what is to be done is you have to generate the hex file. Okay. So for that, what you will do is, first of all, you go to target, okay, and then click on that. ये वाला target, and then click on options for target 1. किया सबने? Yes, sir. फाइन. तो आपने ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड फाइल्स कर लिया, ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, वो वाला फाइल आपने ऐड कर दिया, ASM फाइल ऐड कर दिया. उसके बाद लाइक यू हैव टू, अच्छा इसके पहले आप एक काम करिए, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए, एंड देन यू क्लिक ऑन बिल्ड ऑल टारगेट. यहाँ पे सी दिस ओवर हियर, यहाँ पे आप जाएंगे तो आएगा बिल्ड टारगेट फाइल्स. इसको एक बार क्लिक करिए. ये करने के बाद lcd.asm क्लियर करने के बाद click on build all target files. Okay, so for here you must get the zero error over here. Build all target Sir, files. This clear one. clear कैसे Yes. करता है? And Clear? I didn't get your question. so you said you have to do something before building, right? Build के पहले क्या करना था सर? नो कुछ नहीं करना था. मैंने ये जो ऑप्शन ओपन कर लिया था ना, इसको बंद कर दीजिए अभी, ठीक है. और ये जब आपने lcd.asm अगर आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है तो आप कुछ मत करिए, ये आप अभी पहले आप इसको बिल्ड टारगेट कर लीजिए, ठीक है. यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो प्रोग्राम बेसिकली मींस व्हाट यू विल टू कम टू नो दैट हैव यू गॉट एनी एरर इन दिस प्रोग्राम. सो अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगा तो फिर आपको नीचे वो एरर आएगा. अगर वार्निंग है, वार्निंग्स यू कैन इग्नोर. ओके सर. देखिए बॉटम साइड में आ रहा है LCD 0 एरर आ रहा है सबका. Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Right. So now you can make your target file. Actually, we are going to generate the hex file over there. Okay, हमारा काम क्या है, hex file generate करना, क्योंकि hex file ही हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में देते हैं, ठीक है. अब अगर यहाँ तक हो गया आपका, now you can proceed with the things like you go to target. If you are getting zero error, then only you have to proceed. Otherwise आगे क्या चीज करने का कुछ मतलब नहीं है. So now you right click over here and go options for target 1. Then you will get this window. ठीक है. तो यहाँ पे you can see there are various tabs. वहाँ पे बाकी tabs में कुछ नहीं करना है. You see the target, and here you have to fill the appropriate frequency, and that is 11.0592 megahertz. Whatever I am doing, I am specifically doing for 89C51. अगर आप कोई और दूसरा यूज कर रहे हो तो उसके लिए कितना मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लगता है वो आपको पता करना पड़ेगा और फिर वो फिल करना पड़ेगा. सो आई एम डूइंग इट फॉर 89C51. लुक एट इट. सो आई एम यूजिंग दिस 11.0592. हो गया ये, इतना फिल कर दिया आपने. Yes, sir. Then you have to go to output and then check this box, create hex file. ओके पहला आपको फ्रीक्वेंसी देना है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, फिर दीजिए क्रिएट हेक्स फाइल एंड देन क्लिक ऑन ओके. सिर्फ ये चेक करना है, क्रिएट हेक्स फाइल, देन क्लिक ऑन ओके, एंड then you have to click on this second option, which is rebuild all target file. I want to rebuild again. Fine. So after doing that, please click on this rebuild target files. It will be creating the hex file, which you have to actually burn in the microcontroller. So now see the last thing, creating hex file from LCD, and it has been created with zero errors. Are you getting this point? Yes, sir. Yes. Fine. So how to verify that whether it has been done or not? So the folder in which you have
सेव्ड ऑल द फाइल्स, उसको ओपन करिए और देखिए वहां पे एक हेक्स फाइल आया होगा। ये देखिए यहाँ पे हेक्स फाइल है, मैंने जिस फोल्डर में इसको सेव किया था वहां पे हेक्स फाइल आया होगा। ये देखिए यहाँ पे हेक्स फाइल है। ऐसे ही जाके आप अपने फोल्डर में चेक करें वेदर यू हैव गॉट द हेक्स फाइल और नॉट। Yes, sir. हैव यू गॉट इट? Yes, sir. फाइन, सो नाउ यू आर डन विद द की, देयर इज नथिंग लेफ्ट। ओके, इसके बाद आपका कोई लेक्चर है? यू पीपल हैव द लेक्चर आफ्टर दिस? इसको सेव कर लीजिए। प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू हैव द लेक्चर, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और वो जब भी हमारा क्या बोलते हैं अपना ये जो सेशन होगा, अपना लेक्चर का सेशन होगा तो उसमें 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 to 15 मिनट्स में। सो नहीं सर, डू यू नहीं है। हैव द लेक्चर? किसी का भी नहीं है? नो वन इज हैविंग नहीं। लेक्चर? ओके, देन इट इज गुड, देन वी विल फिनिश इट। सबके हेक्स फाइल जनरेट होंगे? ऑल हैव जनरेटेड द हेक्स फाइल? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, नाउ यू आर डन विद द की। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये हेक्स फाइल को अपने को बर्न करना है। तो अभी अगर आप लैब में होते तो व्हाट वी वुड हैव डन, दैट वी वुड हैव टेकन द हेक्स फाइल, यू गो टू मैडम, वहां पे आपका जो किट है उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है इन द सेम वे विच आई हैव रिटन द प्रोग्राम फॉर, तो वो किट में आप बर्न करिए, ठीक है। और जैसे ही आप बर्न करेंगे तो आपका डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले करेगा जो भी कैरेक्टर्स आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। बट हियर वी आर एट इन ऑनलाइन मोड, सो विल डू इट दैट इन द सिमुलेशन। सो फॉर दैट प्लीज ओपन द प्रोटियस। आप ओपन करिए प्रोटियस। ओके, सबका ये ओपन होगा। देन गो टू फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट, ओपन करिए प्रोटियस, ओपन करिए, देन गो टू फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट। हो रहा है सबका ओपन? Yes, sir. File new project, it will take a little bit of time and it will open it. Fine, then you can give the name. यहाँ तक आ गया सबका? Everyone is getting this window new project में? Here you Yes, can sir. give the name as Sir. LCD try, I am giving any name, you can give x1 number 1 or whatever. So here you give the name and ये new project आपका selected है, click on next. Okay, next में जाएंगे. So you have to create a schematic actually from the selected template. So you just click on the next one and यहाँ पे by default जो आएगा वही select करना है, default. next window में आपको जाना है, create and then default and then click on next. वापस से वही करना है PCB के लिए भी. If you don't wish to create, आप उसको avoid भी कर सकते हैं, but here go to create PCB layout and create default. यहाँ पे select करिए default and click on next. Then you will get this window and here you will have to select the microcontroller that you are going to use. So here you will select the create firmware project, no firmware project nahi, create firmware project, and here you select your microcontroller. ठीक है, 8051 फैमिली तो है ही, उसमें कौन सा है तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 89C51, सर्च करो ऊपर है, ये देखिए 89C51 सेम है ना जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, याद है कील में भी यही सेलेक्ट किया था 89C51, एंड आई टोल्ड यू दैट इफ योर Yes, माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट गोइंग टू मैच फिर आपका आउटपुट नहीं आएगा, सो दैट इज 89C51. फाइन, बाकी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 89C51 सिलेक्ट करिए,
same controller 89C51 and click on next and finish. It will create a window like this. Okay. Okay. So here you have got three things: schematic capture, PCB layout, source code. ये हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे. We have to work in schematic capture. So you can see that now you have got a window where you have one microcontroller available 89C51. यही आपने अभी भी पढ़ा भी है. It will be there in the schematic capture. You can move the things from here. Okay, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप मूव कर सकते हो. इसको छोड़ दीजिए. ठीक है, क्लिक करके छोड़ दीजिए. It will be stable over there. Everyone is getting this one? सबके पास आ रहा है? 89C51 is there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you can see that we have this. Okay. इसके साथ आपको और क्या चाहिए बेटा? LCD चाहिए. LCD. ठीक है. तो LCD खोजना पड़ेगा. तो LCD खोजने के लिए क्लिक ऑन P. ये आपका P है. यहाँ पे देखिए P है. P पे क्लिक करिए. Look at the screen. Here P. You click on it, and here you write LCD, or you write 16 LCD. You can get it very easily. So we are going to use this 16 into 2, that is 2 lines wala alphanumeric LCD LM016L. LM016L. This we are going to select. Okay, and then click on OK. Type 16 LCD. आपको पहला ही आ जाएगा LM016L. Type on OK, and then wherever you are going to put it, it will be available. फिर आप ले लीजिए इसको और क्लिक करिए. It will appear over there. You can hover over here according to your comfort, and then you can make it. Fine. Sir, how to bring it on this schematic? ये ऑटोमेटिक आएगा. उसमें देखो आपको एक कर्सर आएगा. ये आएगा वहां पे, जहां पे आप क्लिक करोगे इसमें, वहां पे ये LCD अपीयर हो जाएगा. ओके करने के बाद when you do OK, this schematic will open, and wherever you click it, it will see. आ रहा है ना यहाँ पे? Like this. Sir. Yes, sir. So, Yes. सर अभी अंशिका का मेरे को मैसेज आया, उसके वहाँ पे लाइट चली गई और उसका लैपटॉप बंद हो गया. तो लाइक अभी पता नहीं कब चालू होएगा. तो अटेंडेंस के लिए उसने बोला कि बोल देना सर को. हाँ ठीक है, अटेंडेंस में दे देता हूँ. All are present, so that she can understand after by looking at the video. ठीक है. Yes sir. चलिए, यहाँ तक हो गया. सबने पुट कर दिया. ये फटाफट से करिए. ठीक है, हो गया यहाँ तक. किसी को कोई तकलीफ? No, sir. किसी को कोई तकलीफ? Okay, fine. Now you have to do the wiring, and accordingly you have to do the wiring. कैसे वायरिंग करेंगे? आपको पता है कहाँ पे आपने पोर्ट करने के. स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम यू हैव टू डू द वायरिंग. फाइन. ठीक है. तो वायरिंग कैसे करते हैं? ये देखिए वायर का है, ऑलरेडी इस पे वायर है. ठीक है. तो आपको पता है कि आपको पोर्ट्स कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? 1.0. ओके, D0. ओके, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है. सो हाउ टू कनेक्ट इट? जस्ट आई विल शो वन कनेक्शन ओवर हियर. जैसे देखिए पोर्ट 3.0, क्लिक करते चलिए, वो ऑटोमेटिकली इधर उधर होता जाएगा. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो इट इज कनेक्टेड टू RS, एंड देन क्लिक ऑन इट. हो गया कनेक्शन. 3.2 को आपने कहाँ पे लिया था? कनेक्शन इज वेरी सिंपल टू मेक ऑन दिस वन. क्लिक करिए, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. और पिन नंबर 3.2 पे क्या लिया था आपने? इनेबल लिया था. इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको आपका वो डिस्क्रिप्शन फिक्स होना चाहिए. इस तरीके से कनेक्शन करेंगे. ठीक है.
You got it that why I'm connecting like this? चलिए कनेक्शन स्टार्ट करिए. I'll show you my file जिसमें मेरा आउटपुट था, so that will make better sense over here. So that is LCD. So how I have done my connection, that you can see, and you have to do the things. तो चलिए अभी फटाफट से कनेक्ट करिए बेटा, देखिए यहाँ पे और देख के कनेक्ट करिए कैसे कनेक्ट हुआ है, देखिए और कनेक्ट करिए. ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है, ठीक है. कनेक्शन आपको पता है कैसे करना है. अभी मैंने 3 करके दिखाया, बाकी पोर्ट वाले कनेक्ट कर दिए फटाफट से, ठीक है. फिर मैं बताता हूँ ये कैसा आएगा, ये सब कैसे करना है. ठीक है, ये कनेक्शन करिए फटाफट से, और जिस तरीके से मैंने किया वैसे ही करना है. मतलब पिन 1.0 जो है वो D0 को कनेक्ट होगा, उल्टा नहीं करना है आपको, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, 1.0 will be connected to 0, 1.1 will be connected to D1, and in this way. Okay, so I'm coming in 1 minute. Please continue with your connections. फाइल्स में जाके पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना अपने को. राउंड ऑफ वीसीसी कैसे लेना है? आज ग्राउंड ऑफ वीसीसी कैसे लूँ? You are done with the connections? सर ग्राउंड ऑफ वीसीसी कैसे लें? हाँ वो मैं बता रहा हूँ. Hello, sir. हाँ बोलो ना. Sir, actually, I'm Aditya. Sir, actually, sir, I have to leave a bit. So I'll look at the rest of the video in the recording. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You get it done because ultimately you have to display your name by doing the Yes, sir. modification in the program. Okay. Yeah. Yes, sir. Fine. I'll do it. Thank you, sir. Bye. Fine. Now, how to place that ground and supply over here? For that, what you have to do? You just take the cursor to the screen and right click over there. You'll get the place option. Okay. Then after the place, you go to the terminal. Here you will get the power and the ground. So the ground you can see and the power. So you have to select the ground, you have to select the power. Okay, so that option you'll get, like I'm selecting the power. So I'll get this icon, you place it anywhere, okay, and then connect it via the terminal. Similarly, you select the ground and you place it over there and you connect it properly to the pins.
If you don't connect it to the proper pins, you'll not get the output. Done, sir. Done. Everyone is done. नो सर सर वो फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट कर रहे तो उसको सेव किया तो फिर वो ब्लैंक हो रहा है, कोई और विंडो खोल नहीं रहा उसमें। अरे ये तुम कहाँ पहुंच गए? स्टार्टिंग में चले गए क्या? यस बंद हो गया था बीच में। कोई बात नहीं बेटा, अभी वहां तक तो नहीं पहुंच पाओगे. इट विल टेक सम टाइम, सो द वीडियो विल बी देयर. यू डू अगेन, एनीवेज यू हैव टू डू इट अगेन, बिकॉज जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. यू हैव टू मॉडिफाई द प्रोग्राम, यू हैव टू राइट योर ओन नेम एंड दैट नेम हैज टू बी डिस्प्लेड ओवर हियर. फाइन, तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, not an issue, just look at the video and you can do it. So people who have done the connection, please check it once again. With any of the wrong connection, you will never get the output. So all the ports of port 1 are connected to the data pins. Register, select, read, write and enable pin are connected to 3.0, 3.1, 3.2 respectively, and VSS is grounded, VDD is supplied. You can leave VE and all other pins which are there in 8051 and on the LCD, you can leave it as it is, not an issue. Okay, so now if you have done, सर ये ग्राउंड you- कहाँ से डिस्प्ले हुआ था? यहीं पे आएगा बेटा, यहाँ पे ले जाओ कहीं पे और ले जाके राइट क्लिक करो. ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो प्लेस आएगा. ठीक है, प्लेस में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में जाके यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे. देखो यहाँ पे ग्राउंड आ गया, इसको कहीं पे भी रख दो. ठीक है, फिर कनेक्शन कर दो. हो गया? Fine. Now people who have done it, please double click on this one, double click on your controller, double click. So when you double click, one window appears. Okay, and it is asking for that hex file that was generated in the microcontroller. So for that you have to browse it. So please browse the file, go to the same folder. If you browse, you will get the hex file over there. कौन सा hex file? जो आपने microcontroller कील में generate किया था by building all the targets. So hex file you generate, you select that hex file and press send. वो hex file आ गया यहाँ पे. Then you click on OK. कैसे करना है फिर से देख लीजिए. डबल क्लिक, then you browse. ब्राउज करने के बाद you go to the same folder जहाँ पे आपको मैंने बोला था. When you have completed the keel, then I told you that you please check that whether there is a hex file or not. The same hex file you have to select. Okay, click on open and click on OK. Okay, and when you are done with it, please save it. Okay, and then run. You can see the run button is extremely at the bottom left corner. So you click on that, run the simulation. See what output I am getting. And it is continuously displayed. Why? Because we have selected here as jump here. So that will keep the program running in the infinite loop until unless you are going to stop the simulation. So, yes. अभी जैसा आपने बोला कि लाइक हम लोग को खुद के नाम का डिस्प्ले करना है. हाँ, तो हम लोग सीधा वो हेक्स फाइल को एडिट नहीं कर सकते, लाइक वो कोड को एडिट करके हेक्स फाइल एडिट ऐसा? बेटा हेक्स फाइल में कुछ नहीं होता. हेक्स फाइल इज नथिंग बट 0 and 1 का कॉम्बिनेशन. वो आप कुछ नहीं समझ सकते. तो वो डिलीट करके उसी जो ASM फाइल है उसको एडिट कर दे तो हो जाएगा ना? ASM फाइल को आपको एडिट करके रीबिल्ड करना होगा ऑब्वियसली. तो हेक्स फाइल अपने आप रीबिल्ड हो जाएगी? हाँ, वो आपको उसको रीराइट कर देना या दूसरा हेक्स फाइल जनरेट कर लो, कोई इशू नहीं है. अच्छा ठीक. या उसको रीराइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस आउटपुट? डन सर.
Have you got this Answer. output? Yes sir. Yes, Yes sir. sir, Yes, डन। sir. एंड Yes, मैंने sir. कोड चेंज किया था गाड़ी तो मेरा नाम भी आ गया। हाँ, okay, ठीक है। So that's okay, fine, very good. Fine. So I hope that you have understood it in a clear manner, that how you write the code, how you do the programming, and actually how you are going to do the thing. Exactly in the same way we would have done in the lab. The same hex file you are going to burn on the kit, and then that kit was showing the output in the same way in which we have done it over here. Or you can take it on the breadboard. You can take it on the breadboard, and then you burn the microcontroller. That is, you put the hex file in the microcontroller, and then you simply put it in the circuit, and that LCD make the connection as it is, that what we have made it over here. And then when you run it, you will get the output like this. सर एक और डाउट, जैसे इसमें Please. 80H यूज किया था लाइन 1 के लिए, तो लाइन 2 के लिए क्या यूज करेंगे? I think that is C0. I don't remember the C0. hex code, but it's, yeah, C0 ही है, C0. ओके Like suppose आपका बहुत बड़ा नाम है, that welcome to NMIMS Mumbai, तो पूरा full हो जाएगा ना, so Mumbai हाँ। you'll have to take in the next line. नो मैं क्या सोच रहा था कि वेलकम टू एनएमएमएस और नीचे यश गुप्ता ही लिख दूंगा ऐसा, तो हाँ ठीक है दोनों ना, चीज हो जाएगा। बेटा वो आपके लिए है, मैं आपको जस्ट हाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो 16 डिजिट्स पूरे चले गए, अगर आपको बीच में व्हाट इज दैट कॉल्ड, थोड़ा ये लेके आना है, मतलब अगर आपको स्पेस लेके आना है, तो जो आप डिजिट डाल रहे थे, जैसे W लिखा था ना, उसके जगह में स्पेस डालिए, तो इस तरीके ओके से स्पेस आया है वो। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द प्रोग्राम, यहाँ पे स्पेस आया है। यस सर। फाइन फाइन, Sir, यस। sir, still here. Actually, I got the output till here, but sir, I have to leave the meeting, sir. It's okay, I am also leaving, like yes, I am just going to end the meeting. So is there is anyone in the group who has not got the output, please tell me. सर और एक और डाउट, Yes, अभी हाँ लाइक पूछो जैसे ना। लाइन 2 पे शिफ्ट करना है, तो ये वापस से इंक्रीमेंट, वो शिफ्ट टू लेफ्ट, तो वो सब करना पड़ेगा? एक बार ट्राई करके देख लो, मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ओके। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो, जब भी सेकंड लाइन लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सब आ जाएगा, लेफ्ट से ही आएगा। अच्छा Fine. Is there is anyone who has not got the output? I'm asking once again. Everyone has got the output. So let me first stop recording. Thank you very much.